Greeting, I am Mrityunjay Sir, and this is the demo lecture on Island Group of India, which is the part of Indian geography. In this lecture, we will be discussing about Indian geographical position, what are islands and how they are formed, a island group of India, the position and division of islands, and at last we will discuss about the geopolitical importance of island of India. Right? Here you can see the world map and you can easily locate India, which is in the east of the world. To validate this statement, here is the 0 degree longitude, which is also known as prime meridian, which divides the world into two halves, the western and the eastern side. And this is the latitudinal 0 degree extent, which is also known as equator, and divide the world into two halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. By understanding this division, we can easily conclude that India lies in northeastern hemisphere. In this video lecture, we will be only focused on Indian Ocean region IOR, which have two branches, Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch, because in these branches our islands are situated, right? So first we will talk about what are islands and how they are formed. Islands are nothing. It is a piece of land which is surrounded by water from all directions. Right? This is the definition of island. Before entering to the formation, you should also know about the peninsula. What is peninsula? You आपने इंडियन पेनिनसुलर के बारे में सुना होगा, इंडियन पेनिनसुलर रीजन. तो पेनिनसुला होता क्या है? पेनिनसुला कुछ नहीं होता. पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ लैंड जो कि हमारा 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है. राइट? 3 साइड से वाटर से हमारे सराउंडेड होता है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, formation of islands can be by 3 physiographical process. One is erosional, second is volcanic, and third is coral. Right? So if I talk about erosional islands, let me first erase the ink. Erosional islands formed when the peninsular part of the mainland get eroded and detached from the mainland by the erosional process of water, and after some over the period of time it gets surrounded by the water and falls in the category of island. Right? Falls in the category of island, erosional island. अगर मैं वॉल्केनिक आइलैंड की बात करूं तो वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म होते हैं जब हमारा लावा स्प्रेड आउट हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में ओशन के. राइट? और ये क्या बना देता है? वॉल्केनिक आइलैंड की फॉर्मेशन कर देता है. हवाई एक इसका एग्जांपल है. हवाई आइलैंड इसका एग्जांपल है जो पैसिफिक रिंग में पड़ता है, क्योंकि पैसिफिक रिंग में पड़ता है. राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट physiographical process, which is of coral, with the help of coral, how islands are formed. So first of all, what are corals? Coral are the organism which falls in the category of Animalia. And if I talk about specification, it comes under the Colentrata. Right? Colentrata. Corals are composed of two tissues. One form the outer shell, which is composed of CaCO3. One form the outer covering of this organism, which is CaCO3. And this is CaCO3 gives a surface of an island. Here you can see. Right? And these type of islands are known as coral reef island. And Caribbean Sea, the islands which are found in Caribbean Sea are the example of coral reef islands. Right? Lakshadweep is also an example of coral reef island. Further, this is the region of Indian Ocean, right? IOR, and it has two branches: the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch.
In Arabian Sea branch, we have a group of islands which is known as Lakshadweep, right? Lakshadweep are broadly divided into three groups. One is Amandivi Island. Second is Lakadiva Island. And third one is Minicoy, which is the largest island of this group, right? Kavaratti is the capital of these islands. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अंडमान और निकोबार की बात करूं, अंडमान और निकोबार हमारे दो ग्रुप है आइलैंड के जो कि 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है. चैनल्स की बात हम आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे, राइट. इफ आई टॉक अबाउट मोर स्पेसिफिकेशन, Lakshadweep Islands are group of 36 islands in which 11 are inhabited islands, and their latitudinal and longitudinal extent is 8 degree north to 12 degree north and 71 degree east to 74 degree east longitude, right? And these are, I've already mentioned, these are made from coral reefs. These are made from coral reef, right? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं तो बे ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा हिमालयाज का एक्सटेंशन है, राइट. हिमालयाज का एक्सटेंशन है एंड ये हमारे 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसमें से 37 आइलैंड्स इनहेबिटेड है, राइट. इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ टू 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट. अंडमान एंड निकोबार में ही हमारा इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है, वो भी स्पेसिफिकली निकोबार आइलैंड्स में, राइट. ओनली एक्टिव वॉल्केनो विच इज नोन एज बैरन आइलैंड, राइट. इसकी लोकेशन हमारी निकोबार आइलैंड्स में. फर्दर अगर मैं अंडमान निकोबार की आगे बात करूं, these are some important peaks of Andaman and Nicobar. UPSC generally frame question based on these peaks, right? You have to just understand the chronology of these mountains. कभी कभार हमसे पूछ लेता है यूपीएससी कि अरेंज द फॉलोइंग पीक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और कभी कभार हमसे पूछ लेता है कि अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इट विल बी सैडल पीक. कभी कभार हमसे पूछ लेता है निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इट विल बी माउंट थ्रिविलर, राइट. तो अंडमान और निकोबार हमारे डिवाइडेड है नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान, साउदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान. साउदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमारा डुकन पास मिलता है, राइट. डुकन पास हमारा साउदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में मिलता है. और फिर अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल से ये डिवाइडेड है. वी विल डिस्कस चैनल इन डिटेल इन लेटर ऑन, राइट. अगर मैं कार निकोबार की बात करूं तो कार निकोबार से नीचे आ जाता है हमारा ग्रेटर निकोबार, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट थ्रिविलर, राइट. पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है. जैसे हमने कारावटी पढ़ी थी लक्षद्वीप की कैपिटल, वैसी अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, right? Port Blair. Then let us talk about channels now. Channels, what are channels? Channels are nothing, these are the water passage between the two land masses, right? जो हमारे दो लैंड मास को कनेक्ट करता है, वाटर पैसेज, जहां से हमारी शिप ट्रेवल कर सके, तो उसे हम कहते हैं चैनल्स. यू हैव हर्ड अबाउट स्ट्रेट ऑल्सो. For example, Strait of Park Strait of Gibraltar, right? These are nothing. These are the narrow passage between the two water bodies, which connect two water bodies. A narrow passage which connect two water bodies is known as strait, right? For example, here is Strait of Gibraltar, which connect Atlantic Ocean from Mediterranean Sea, right? Here you can see Strait of Gibraltar is acting as a passage between these two water bodies. On the other hand, this is famous English Channel, which connect United Kingdom from north of France, right?
ये हमारे दो लैंड मास को कनेक्ट करने में काम आता है. So now you can easily understand what are channels and what are straits. So these are the prominent channels of Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar we have already discussed. It is divided by 10-degree channel, and you have all you should learn about Dukan Pass, right? On the other hand, अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूँ, the northern part is comes under the Amandivi Island group, right? Which is divided by 9-degree channel from Minicoy Island, which is also known as Lakadiva Islands, and Minicoy is separated by 8-degree channel from Maldives, right? So basic chronology, you have to remember that Amandivi Islands, these are Amandivi Islands divided from Lakadiva Islands by 11 degree. फिर Lakadiva Islands are divided by Minicoy by 9 degree, and Minicoy is divided by Maldives by 8 degree. Right. These are also important channels with regards to Lakshadweep Island, right? And on precise perspective, you can always you can always understand this image, right? Now, these are some strait and channels which are recently in news and have high importance regarding to your paper, and this falls in Indian Ocean category. First of all, Bable Emenda, which connects Red Sea from Indian Ocean. Secondly, Mozambique Channel, and the most important, which is Strait of Malacca, right? Now, if I talk about Andaman and Nicobar geostrategic significance, Andaman and Nicobar are very near from Strait of Malacca. Right, Strait of Malacca is very important because it is a shortcut to enter in the South China Sea. Right, हमारा जितना भी चाइना का चाहे पेट्रोल है, चाहे हमारा जितना भी चाइना का पेट्रोल हो गया, जितना भी गुड्स हो गए, वो सारे इसी स्ट्रेट से होके जाते हैं. इट इज द मोस्ट बिजीएस्ट स्ट्रेट. हियर इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस स्ट्रेट, राइट. ये हमारा साउथ चाइना सी में एंटर होने का एक बहुत शॉर्टकट रास्ता है. सो अंडमान एंड निकोबार हेल्प अस टू मॉनिटर दिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट, राइट. ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, it is in the Arabian Sea branch, which is near from Bable Emenda, which you recently have seen, right. वो हमारा जो पेट्रोलियम सारा आता है ईरान इराक से जितना भी हमारा पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट होता है, वो बाबले एमेंडब से होते हुए रेड सी से होते हुए हमारा इंडियन ओशन में आता है. और इस वाइटल पॉइंट को मॉनिटर करने के लिए हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. अदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले हम देख चुके हैं, लाइक ऑपरेशन कैक्टस which was held in Maldives by our forces, ऑपरेशन नील, राइट. ये हम किसी पॉलिटिकल क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट. तो मतलब बेसिक एसेंस ये है कि लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी को मॉनिटर करने में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. सो दिस इज द समरी ऑफ our islands, right, and their importance in our if we study about the physiography and geography of India, right. So thank you.